बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब लोगों का बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मीडिया का, पाकिस्तान का, और जो इंटरनेशनल मीडिया भी आया हुआ है, आप सब की मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस सर्दी में आए कवरेज के लिए, और एज़ ऑलवेज़ आपने कश्मीर कॉज को हमेशा हाईलाइट किया है। और आज हमारे पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेलीगेशन आई हुई है माशाल्लाह से। मिस्टर ज़फ़र बंगश साहब जो हैं, जो कन्वीनर हैं फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर के, और उनके साथ कमेटी जो कनाडा की है उसके का हेड करें इस डेलीगेशन को। इनके साथ डॉक्टर जॉनथन कुतुब हैं जो कि फाउंडर हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं कैनेडियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, अलॉन्ग विद मिस कैरन रॉडमन। और ये हैं मिस मिकेला लेविस जो कि इसके ऊपर पूरी रिसर्च कर रही हैं ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ और इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और जो प्रॉब्लम्स फेस की जा रही हैं। और ये इनका कनाडा की गवर्नमेंट, डिफरेंट वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज़, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है। और ये दिन रात कनाडा में भी और जितने भी इनके इंटरनेशनल लिंक्स हैं अलॉन्ग विद उस पर सब काम करें। और एक्सपर्टीज़ सबसे ज़्यादा इनकी हैं जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है और ह्यूमन राइट्स का जो लॉ है, जिसके अंदर कश्मीर का मसला बेसिकली फॉल करता है, क्योंकि बेसिकली ये एक लीगल मसला है। यूएन रेजोल्यूशंस के मुताबिक हक़ खुद इरादियत का जो लीगल राइट है उसको लेने के लिए ग्लोबल कैंपेन करना, और उसके साथ साथ उसी वजह की वजह से दैट इज़ द रीज़न कि इतना ग्रोस ह्यूमन राइट्स वायलेशंस भी हो रहा है। तो उसको बहुत ज़रूरी है इस वक्त दुनिया तक फैलाना। जिस तरह माशाल्लाह से पैलेस्टाइन का जो मुकदमा है, दुनिया में हर किसी को पता है कि इज़राइल जो कुछ वहाँ जुल्म कर रहा है, मगर कश्मीर का जो मसला है जो 70 सालों से, जो कि दुनिया को उसका एग्जैक्ट ग्लोबली उसके ऊपर अवेयरनेस नहीं है, जो कि मैंने भी आज इनसे डिस्कस किया, ज़फ़र बंगश साहब ने भी, और डॉक्टर जॉनथन एंड मिस कैरन एंड मिस मैकला, दे वर ऑल वेरी कंसर्न्ड कि ये क्या वजह है कि इसके ऊपर बाकायदा कैंपेन नहीं हुई, क्योंकि ये ग्लोबल सिक्योरिटीज़ में ये मसला फॉल करता है। बेशक ये ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, मगर ये एक न्यूक्लियर टिकिंग टाइम बॉम्ब भी है। एक पूरी कौम को जो 4 महीनों से यरगमाल बना के बिल्कुल उनको कत्ल करने का मुकम्मल मंसूबा बना लिया हिंदुस्तान ने। उनके जीने मरने सब राइट्स ले लिए हैं। और मैंने इनको बताया जो वहाँ हमारी लीडरशिप है, हुर्रियत रहनुमा है, जिनके बारे में सब बड़े कंसर्न थे, स्पेशली अबाउट यासीन साहब, उनको जो डेथ सेल में रखा गया है। तो मैंने इनसे अपील भी की है इनकी पूरी डेलीगेशन से कि जो हमारी लीडरशिप है, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं इस वक्त, उनके केसेस जो है उसके ऊपर कोई रिलीफ देने के लिए आप लोग हमारी मदद करें। और हमें हेल्प मांगनी है इस वक्त, अल्लाह से भी मांगनी है, अपने इंसानों से। और इस पर मैंने ख़ुद भी जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको याद होगा 2 साल पहले भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, और मैंने उनको लेटर भी भिजवाया था, जवाब भी आया था उनकी फॉरेन अफेयर्स कमेटी से। वही मैं इन डेलीगेशन को भी बता रही थी कि कनाडा ने भी हमेशा ह्यूमन राइट्स की बात की है, आप लोगों ने भी एडवोकेट किया है। और ये अभी बता भी रहे थे पॉलिटिकल पार्टी का वो आप एनडीपी ने भी बहुत, वो खुद ज़फ़र बंगश साहब आप लोगों को एजुकेट करेंगे। तो थोड़ा सा few words in English. I would like to thank this honourable delegation that has come from Canada, which comprises and is being headed by the convener of Friends of Kashmir Canada, Mr. Zafar Bangish Sahab, and Dr. Jonathan and Miss Karen, Miss Mekla. They're all experts on international humanitarian law, and they're very passionate and committed about raising a voice for people of this conflict, which is the oldest pending conflict in the United Nations, along with the Palestinian issue. And global peace, global security is directly linked with this. And I was sharing with them that I don't think even human rights exist for the Kashmiris or the Palestinians, because maybe we belong to some other planet, that the world is watching us, they are condemning it strongly, but no action is being practically be taken to stop this level of violence and genocide and massacre. So we all need to, as global citizens, join hands and raise a voice for global peace. I shared my own personal life story, that my husband is in a death cell, and our daughter, the 7-year-old Razia Sultana, hasn't seen her father for 5.5 years. And she was attacked and tortured by the Indian Army when she would visit, when she was in my lap, when we would visit my husband in Tihar, in Central Jail, Srinagar. And
whatever's happened with Yasin, that's like an open book. Every pore, every part of his body is an evidence that of the brutality and the torture that he has faced for his nation, not for his personal gains. There were many a times when he was lured and being given lucrative offers to give up, to renounce his struggle. But he said that till my last drop of blood, every moment of my life is committed to the people of Jammu and Kashmir, and I will fight this oppression and this suppression and occupation from the Indian state, because it's a completely illegal occupation, especially after Article 370. It's a 35A. It's a terrifying situation because India has surpassed their own Indian constitution, bilateral treaties, multilateral treaties, all UN resolutions. I think you can better explain, and they have surpassed all international humanitarian laws, human rights laws, and all treaties, conventions, rights of political prisoners, and they are ready for a bloodiest massacre. And we need to stop this before the whole world gets engulfed in this fire. And this is not an issue between India, Pakistan, and the Kashmir. It's a global issue. It needs global voices. Because if that does not happen, it's the deadliest nuclear ticking time bomb. The way on February 22nd, nuclear codes were exchanged, we were very close. The whole world would have been wiped out. So let's save humanity. And let's save the world from the insanity of Mr. Modi and his current regime and their occupation. Thank you once again. I would like to give the mic to the Honorable Mr. Zafar Bangish Sahab, and he can share his commitment and his work that he's doing passionately for the Kashmiris. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपनी बहन मिशाल मलिक साहिबा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें अपने यहाँ मदऊ किया और अपनी मसरूफियात के बावजूद हमें टाइम इनायत किया, और आप सबका जो मीडिया के नुमाइंदे हैं यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। हमारा जो डेलीगेशन है ये मेरे साथी डॉक्टर जोनाथन कताब, जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉयर हैं और एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ में। ये ओरिजिनली फ़लस्तीन से हैं लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में लॉ प्रैक्टिस करते हैं और कनाडा में भी वहाँ विजिटिंग प्रोफेसर हैं और मुख्तलिफ़ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के बानी भी हैं। और उनके साथ जो हैं यहाँ पर हमारे साथ हमारी बच्ची जो हैं मिकेला लेविस, ये टोरंटो में यॉर्क यूनिवर्सिटी में मास्टर्स की डिग्री कर रही हैं, और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि कुछ स्टूडेंट्स को हम इन्वॉल्व करें जो कि कश्मीर पे रिसर्च करें, तो इन्होंने इसको एक्सेप्ट किया। और ये इनका टॉपिक है फोर्स्ड माइग्रेशन एंड इंटरनेशनल लॉ, ए केस स्टडी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये हमारे साथ इस डेलीगेशन में तशरीफ़ लाई हैं। वो मुख्तलिफ़ कश्मीरी बहन भाइयों से बातें भी करेंगी, रेफ्यूजी कैंप्स में भी जाएंगी, वहाँ इन्वेस्टिगेशन करेंगी कि उनके क्या मसाइल है, क्या सिचुएशन है। और उनकी वालदा जो हैं कैरन रॉडमन, वो जस्ट पीस एडवोकेट्स की बानी हैं और उसकी डायरेक्टर भी हैं। बहुत ही मुतहरक खातून हैं, बहुत उनके कॉन्टेक्ट्स हैं। उन्होंने कैरन ने और जोनाथन ने मुझे दुनिया के मुख्तलिफ़ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉयर से मिलवाया, जजेस से मिलाया, ताकि हम कश्मीर के कॉज को आगे लेके जा सकें। मैं चंद बातें कनाडा के हवाले से आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ। वो ये हैं कि जब से ये 5 अगस्त से जो वाक़यात रौनमा हुए हैं, हालांकि मैं कश्मीर के कॉज से तकरीबन कोई 30 साल से मुंसलिक रहा हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त अहबाब जो हैं कश्मीर से हैं, तो मैं चाहता था कि भाई उनके लिए भी आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी है। आपको मेरे नाम से अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं कश्मीर से नहीं हूँ, मैं पठान हूँ, कोहाट का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं बचपन में ही पाकिस्तान से चला गया था, पहले इंग्लैंड गया, फिर उसके बाद कनाडा। लेकिन मुझे हमेशा से ह्यूमन राइट्स के हवाले से बहुत फ़िक्र रही है, और दो जगह हैं दुनिया में, एक कश्मीर है और एक फ़लस्तीन है, जहाँ पर बहुत मुसलमानों पर मज़ालिम हो रहे हैं। तो कश्मीर के हवाले से हमने कनाडा में 5 अगस्त के बाद कनेडियन गवर्नमेंट को रजू किया, उनको खतूत लिखे, पिटिशन्स लॉन्च की, बल्कि सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को, सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं। और उसके बाद हमारी फॉरेन मिनिस्टर से मीटिंग भी हुई, इसी सिलसिले में उनको हमने प्रेस किया कि जी वो इस इशू को जो है इंटरनेशनल लेवल पे उठाएं। और इस वक्त हमारी कोशिश जो है वो ये है कि हम
انڈین گڈس کا بائیکاٹ کریں، کیونکہ وہ جو مظالم کر رہے ہیں کشمیر میں اس کا کچھ ریئیکشن کسی نہ کسی لیول پہ ہونا چاہیے. اور دوسری بات جو ہے، ہم لوگ ڈاکیومنٹیشن کر رہے ہیں کہ جو ہیومن رائٹس وائلیشنس ہوئے ہیں، تاکہ اس کو پھر اپروپریٹ فورمز میں اٹھایا جائے، کیونکہ جب تک ہمارے پاس پراپر ڈاکیومنٹیشن نہیں ہوگی ہم اپنے کیس کو پیش نہیں کر سکیں گے صحیح طریقے سے. تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ جب یہ ڈاکیومنٹیشن، یہ ڈیلیگیشن کا مشن یہ بھی ہے کہ ہم یہاں ڈاکیومنٹیشن صحیح طریقے سے کریں اور اس ڈاکیومنٹس کو پھر ہم ان دا فیوچر استعمال کریں. ہم یو این کے ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس سے بھی ان ٹچ ہیں، ان کو بھی ہم ارج کرتے ہیں اور کرتے رہے ہیں کہ وہ اس ایشو کو اٹھائیں، اس پر کریں. اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 2 سالوں میں انہوں نے 2 رپورٹس شائع کی ہیں، ایک جون 2018 میں اور پھر دوسری جولائی 2019 میں ان کی رپورٹس آئی ہیں، اور انہوں نے اب اس ایشو کو جو ہے ہائی لائٹ کیا ہے. اور فائنلی میں یہ عرض کروں گا کہ میری جب کینیڈا میں میڈیا کے ساتھ بات چیت ہوتی رہتی ہے، اور اس مرتبہ الحمدللہ اچھی خاصی کوریج ملی ہے میڈیا میں بھی، تو میں نے ان سے یہ کہا، میں نے کہا بھی دیکھیے بات یہ ہے کہ کشمیر کی آبادی جو ہے وہ تقریباً 8 ملین لوگ ہیں، اور ان پر ٹوٹل لاک ڈاؤن ہے، ان کو نہ کھانا میسر ہے، نہ پانی، نہ میڈیسنز. میں نے کہا آپ لوگ ذرا یہ، میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر 8 ملین جانوروں کے ساتھ ایسا کوئی سلوک کرے تو مجھے یقین ہے کہ یہاں پر سب لوگ سڑکوں پہ نکل آ کر اس کے خلاف احتجاج کریں گے اور اس پر آواز اٹھائیں گے. تو میں نے کہا آپ 8 ملین مسلمانوں کے لیے یا انسانوں کے لیے کیوں نہیں آواز اٹھاتے؟ ظاہر ہے ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم اس کو کوریج دیں گے اور دیتے رہیں گے. اور الحمدللہ اس مرتبہ وہاں پر اچھی خاصی کوریج دی گئی ہے کشمیر کے ایشو کو، نہ صرف کینیڈا میں بلکہ باقی جو ممالک ہیں وہاں پر بھی اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے. اور ہماری کوشش یہ رہے گی کہ ہم اس ایشو کو ورلڈ اٹینشن میں ہی برقرار رکھیں، اس کو گرنے نہ دیں، کیونکہ یہ انسانیت کا مسئلہ ہے. جیسے کہ ہماری بہن نے فرمایا کہ سیکیورٹی کا ایشو ہے، پوری دنیا کی سالمیت کا مسئلہ ہے یہ. اگر خدا نخواستہ جنگ چھڑ گئی تو ہیومینٹی وائپڈ آؤٹ ہو جائے گی. اس لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ اس مسئلے کے لیے ہم حل تلاش کریں، جنگ کے ذریعے نہیں بلکہ مذاکرات کے ذریعے اور یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشنز کے تحت اس کو ہم ریزالو کریں. تو انشاءاللہ ہماری اپنی کوششیں جاری رہیں گی. ہم آپ سے بھی تعاون کی اپیل کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں، ہمیں یہاں کے انفارمیشن پرووائڈ کریں، اور اگر آپ کو ہمارے یہاں سے کسی انفارمیشن کی ضرورت ہو ہم ہر وقت حاضر ہیں، ہم وہ انفارمیشن پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارا یہ جو دورہ ہے یہ سکسیسفل ہوگا، ہمیں انفارمیشن ملے گی اور انشاءاللہ ہم وہاں جا کر اور جذبے سے کشمیر کے کاز کو ہائی لائٹ کریں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ ہمارے ساتھی ڈاکٹر جوناتhan Katab probably would say a few words. Obviously he will speak in English. He'll speak in English, but I'm sure you all understand English. Please. Thank you. I'll be very short. My name is Jonathan Katab. I'm a Palestinian lawyer and human rights activist. But I want to say very clearly that my presence here is not only because of solidarity that many Palestinians, almost all Palestinians that I know, feel with the people of Kashmir, although that is true. My presence here is because human rights are universal rights. And when anybody's rights anywhere in the world, whether it's in Palestine, Kashmir, or anywhere else, are violated, we all suffer. We need to support human rights as a universal value. Also, we need to support international law, international resolutions, international institutions, at a time when even somebody like the President of the United States tries to move away from international law, tries to insist on national, narrow, individual politics. We need to remember why international law developed this way. Because the human race has decided we cannot afford war anymore. It is not an accident that this particular dispute is happening between two countries or involving two countries which are nuclear powers. How do we resolve disputes? Do we resolve them by resort to violence and power,
or do we resolve them by resort to international law and international principles? It's very important, not just for you and for us, not just for Kashmiris and Palestinians, but for the whole human race, that we pursue nonviolent, legal methods that are based on human rights, human dignity, respect for every individual anywhere in the world. And if the governments are not willing to do it, ordinary people, civil society must participate and must put pressure on their own governments and on other governments so that we can live under the rule of law with full respect to human dignity. When we hear about the lockdown in Kashmir, how an entire population is being kept, just like people in Gaza are being kept under a permanent siege, we know that these violations of human rights need to stop and need to end. And we must find a way for solidarity, for human rights, human dignity, and international law. Thank you very much. Thank you. Okay. Yes, that's okay. Go ahead. I'd just like to thank Mishal Malik for welcoming us and Zafar for putting this together. My name is Michaela Levis. I'm a York University master's student of social and political thought. Inshallah, I'll move on to do a PhD in politics or a similar avenue. I stand with Kashmir just as I stand with Palestine. You cannot stand with international law and not stand with Kashmir. I want to make that very clear. The speakers, Zafar and Dr. Jonathan Katab, spoke eloquently about the rule of law and about how the international community must stand for human rights. I would like to note that under Canada's own domestic law, outside of international law, while that is imperative, we have our own special economics sanctions measures for countries that are violating significant human rights, such as Israel and India. So until Canada has a military boycott on all weaponry and all and boycotts India, the international community and Canadians, American citizens must go to the streets, must make their voices heard, and stand with international law. I'll keep it brief, but thank you again so much for your time. Thank you. Thank you. What an honor to be able to be here and stand in solidarity beside you, with you, as it is in Canada to stand with your brothers and sisters from the Kashmiri community, the diaspora, who are standing so much with you and are really guiding and helping us from outside your community on how we can take that stand. And certainly to be able to engage and to get civil society, to get leaders from faith communities, from human rights organizations, from civil society, to be able to understand what's happening in Kashmir and to be able to speak out and to put that pressure that Michaela has just talked about on our own Canadian government, on our own governments around the world, to follow our own law and to stand with international law is so important. So as Zafar had mentioned, boycotts and starting to talk about boycotts, it's really, I actually co-founded or was part of the founding of the Canadian BDS Coalition, working with the Palestinian Boycott, Divestment and Movement, National Movement, and we have about 30 groups across Canada. And it's been really to watch some of the statements that have come out from Palestine around standing around boycotts and linking both the military sales to India from Israel, but beyond that, standing in solidarity. And I think that's an area to certainly work with our Palestinian brothers and sisters around the boycott and divestment side, but then to stand strong on the call for sanctions, to call, ultimately for the UN to be putting sanctions ultimately under the UN
for India. And I know that's a long haul and maybe not that practical as we stand here, but to keep voicing that and voicing that strongly. Certainly with the revoking of Article 35A in particular, and the opening of the floodgates for the occupier moving their own population into Jammu and Kashmir, and the settlement and the development, we realize that really has opened up that floodgate, the floodgate that we see so much in Palestine, and that is so important and puts the urgency there. And certainly the detainment, the kidnapping of the youth is the other thing that just breaks our heart. And again, watching and understanding some of the mechanisms with organizations, international organizations like Defense for Children International, such as is in Palestine and does really detailed research on the ground. They have the advantage of being able to do that detailed research that isn't possible behind the lockdown at the current time in Kashmir, but how to work and to bring some of those lessons learned into a slightly different context, and to be able to really shine a light on the fact that the children are being kidnapped and the terror that's creating in the sure is a part that really is touching and breaking our heart. And I think an accessible point for us to talk to our politicians about, because who can say that torture of children is okay? Who can say that? So we're open to hearing and how we can best stand with your community as we go home and the work that's needed to do the best that we can. And inshallah, we'll be meeting with a free Kashmir. Inshallah. Thank you. It was. Thank you so much, the entire delegation, and truly honored and feeling blessed to have such great human beings with a great heart and soul. Rising up for humanity and for voiceless people of Kashmir and of Palestine. And I think above all, everything, I think we all have children, we all have families, we all eat, we all drink water, we have electricity and petrol for our cars and medicine, but over there you have none of these. It's a pipe dream to even dream of normalcy. So I think for the people of the privileged world, the first world, I think you have a very powerful say in making global policies, and I think it's the strategists and the policy makers and of think tanks and of human rights organizations who actually change or drift the policies of the state and of the countries. So I think it's very, very important that we work with the policy makers, with experts like you people who can shed some light on this and actually do some strong research and advocacy for the rights of the people of Jammu and Kashmir, completely leaderless right now, voiceless, hostage, blinded, deafened, everything you can even think of. We are on another planet, so completely inaccessible. So I think it's with full force we need to do this and make our networking internationally strong. And the way you've started this boycott Indian products, it's a very bold initiative, and I think you've started it, and inshallah, I think God willing, it will raise the consciousness of the global public. And I always mention the global public because I believe we cannot marginalize such issues because we are living in an era of globalization. So it's very important to take charge and take the responsibility of human rights and for the people who are in a very dangerous position. So thank you once again, and we will be working very closely. I will be sharing details of my husband, Yasin Malik, of the death trial, the fake cases against him, the torture, and from this podium, I would like to request all of you to start an international Release Yasin Malik campaign and of all the political prisoners, because he is in the worst form right now. And as I told you, he's a beacon of hope for his people. So if, God forbid, anything happens to him, the way they're taking this trial, I think already the Kashmiri people have lost trust in any kind of dialogue between India and Pakistan because India backs out. So through bilateral. So if anything happens to our top leadership, we can't even imagine the backlash. So that itself will be the deadliest bomb ever
for not just the region, for the world. So the key to it lies in the popular leadership that calls the shots, which is blindly trusted by the public. So we have to save them if we really want peace in the world. So please, I would request you, not just as his wife, but as one of the freedom fighters, that we want peace, and for that, we need to save our leadership and our people. Thank you once again. Thank you to the entire media. आप सब लोगों की बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ और अब जी जी